And at the World Economic Forum 2 this year, India spearheaded the launch of Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality. And the recognition that the global good hinges on gender equity and equality marks a new beginning, which is not only exciting, but also interesting. And when we come to agriculture, it is a known fact that about 80% of all the economically active women are in agriculture. And there is an increased migration of men from rural areas to urban areas. So which basically brings to the light the fact that there is an increasing feminization in agriculture. And if we give them proper access to knowledge, technology, and empower them, it is not only going to do good for them, but it is going to be good for agriculture as well. So in this seminar, we try to focus on ideas and interventions to address the gender gap and drive gender equality and empower them with entrepreneurship. So with this, I would like to invite Reena Soni, who is the Executive Director, HEFOR India. They're also our partners in this webinar. So welcome, Reena. Just what do you think about this particular topic today? Yeah, thank you so much, Anjana, for inviting us and for talking about this very, very important activity, today. And you are very right when you are mentioning about that 80% of, economically active women are in the agriculture sector. And at HEFOR India, we, in fact, have the privilege of witnessing, this firsthand, that when we work with these smallholder farmers, when we are able to give them the access to finance, when we are able to give them the access to technology, when we are able to give them the other, access and bring them at par as they move forward, the kind of achievements that they are able to do is truly, truly remarkable. And in fact, today, you will have some of the women, the smallholder farmer women, whom we have been working for, talk about it, and you will see how this has been able to impact their lives. And Anjana, when I am talking about this, one thing comes to my mind. So in HEFOR, we are working with close to 120,000 women farmers. And last year, around the same time, we had our global CEO join us, and we were on a visit in Bihar. And we were in Madhubani. We were sitting with one of the farmer producing organization. And I still remember that thing very vividly because it has got etched in my mind. I remember, there is this board member, and her name was Sanju Didi there. And when we were doing this round of introduction, she introduced, and you know what she said? She introduced herself to our global CEO, Surita, and she said, "You are CEO of an organization with money. I am a CEO of this organization which doesn't have money. But I think what is common between us is both of us have a vision for this organization." And when she made that statement, I was like actually blown apart because when I could clearly see that when you are able to work, with them and how they have been able to imbibe it. And at HEFOR, we feel that when you empower one, you empower everyone. This ripple of change, which comes in is truly, unstoppable. Is how I would say that they become. So I'll just stop here, and I think it's very, very important for all of us to not only celebrate women on Women's Day, like we typically do, but I think women need to be celebrated every day. Each day has to be like an international Women's Day, and we need to really look and ask ourselves questions that what is it that we are actually doing to remove these barriers that exist for women to participate. So yeah, thanks, Anjana. This is what I wanted to really talk about. Thank you, Reena, so much. I can actually see the passion that is coming out of you while you're talking about the work that you have been doing, especially with the farmers, women farmers, and how your farmer reacted to, like they actually know what they're doing. Yeah. And that's why she said that she is the CEO of a company without money. And that is basically what we all want.
they have to know, they have to be empowered with that knowledge that it is possible for them. Yes. And to drive the point of what Reena was making, we have some farmers also joining us. So I'd like to invite today um, Ms. Kavita Singh. She's the board of director, FPO Odisha. So before letting her talk, I'll just give a small introduction about her. She's a dynamic and visionary leader serving as a board member of Hatikot Farmer Producer Organization in Odisha. With a strong focus on business development and gender inclusivity, she spearheads initiatives aimed at empowering women in agricultural value chains, particularly in backyard poultry and goat rearing. So I'd like to invite Kavita Singh. सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाइपर इंटरनेशनल इंडिया को, जो मुझे मौका दिया है कि मेरे विचार को यहाँ पर रख सकूं। जी, मेरा नाम कविता सिंह, ओडिशा से आई हूँ, बारीपदा ब्लॉक से हूँ मैं। हाथीकोट प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैं एमडी हूँ। आज मार्च 8 विश्व महिला दिवस। आज हर जगह में महिलाओं ने खुशी से पालन कर रहे हैं विश्व महिला दिवस को। मुझे एक महिला होने से गर्व होता है, क्योंकि मैं आज सशक्त हूँ। एक दिन था मेरे कुछ पहचान नहीं था। मेरे पहचान था तो एक पत्नी का, एक बेटी का, तो एक माँ का। लेकिन आज मेरे को जो पहचान मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो हाइपर इंटरनेशनल मेरे को पहचान दिया है। क्योंकि जो मैं एमडी हूँ, जो मुझे एमडी बनाया है, जो महिला ने मेरे को नियुक्त किया है, इसीलिए मैं खुद को गर्व अनुभव कर रही हूँ। एक दिन था जो मैं एक घरेलू महिला थी, मेरे घरेलू काम से ही मेरे समय जाता था। लेकिन आज कुछ महिला को लेकर मैं खुद को उद्योगी बन पाई हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि 2013 में मैं एसएजी से जुड़े हुए थी। फिर 2015 में हाइपर के साथ हम जुड़े। हाइपर पर आने से हम लोग को बहुत सारे तालीम मिला हमको, जैसे कि आधारशिला तालीम, उन्नत पशुपालन का तालीम, आईएम का तालीम, बहुत सारे तालीम, जो कि हमको परिवर्तित किया। हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। जो बिजनेस हम लोग जैसे कि बकरी पालन, जैसे कि मुर्गी पालन करते थे, लेकिन वो सब इतना उन्नत धरण से नहीं था। लेकिन जब से हम लोग हाइपर से मिले, तो हम लोग का जो बिजनेस का तरीका बढ़ा। हम लोग जो उन्नत चिंताधारा से हम लोग का बिजनेस किए। अभी तो हम लोग मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हम लोग जो एग्रीकल्चर का भी स्कीम हम लोग अप्लाई किए हैं। गांव के महिला के साथ, महिला लोग आज जुड़े हैं हम लोग के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, उनका बिजनेस को, उनका इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिन में जो हाइपर हम लोग के साथ जो आधारशिला ट्रेनिंग दिए थे, उसका प्रभाव हम लोग के जीवन में, हर एक महिला के जीवन में उसका प्रभाव पड़ा है। आगे तो हम लोग सोचे थे कि जो मानसिकता था महिलाओं का, वो मानसिकता आज नहीं है। वो भी खुद घर से निकलकर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग का जो योजना सब है, हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हर महीना महिलाओं लोग 15,000 रुपये उनका इनकम हो सकता है। जैसे कि हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग का जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, हर एक महिला को यहाँ 200 मुर्गी हो पाएंगे। हर एक महिला के पास 50 बकरी हो सकता है। जैसे कि बकरी पालन करके और मुर्गी पालन करके साथ साथ वो जो खेती बाड़ी करते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी करते हैं, वो सब लेकर वो महीना में 15,000 रुपया वो कमा सकता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग का पास जो हम लोग प्लानिंग किए हैं, हम लोग का एरिया में, जैसे कि हम लोग एक कटिंग सेंटर जो कि हाइजीनिक होगा, जो हम लोग के पास जो बकरी है, हम लोग तो ऐसे तो हम लोग बेच रहे हैं कि जो शादी के यहाँ हम लोग शादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। लेकिन
जो हाइजीनिक सेंटर होगा वो हम लोग शादी का यहाँ देने के साथ साथ हम लोग उसको बाहर भी भेज सकते हैं। तो देखिए वो सब कुछ जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं उसके साथ हम लोग बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हाईकोर को, जो जिनके लिए आज हम लोग इस जगह में पहुंचे हैं। मेरा कुछ पहचान नहीं था, लेकिन हाईकोर के लिए आज मैं सभी क्षेत्रों में मेरे को लोग पहचानते हैं, मेरे को सम्मान मिला है। मेरे साथ 3,000 लोग जुड़े हैं, 3,000 महिला जुड़े हैं। फिर भी और भी 2,000 महिला जुड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम को देखकर, हम लोग का बिजनेस का जो इम्प्रूवमेंट को देखकर वो लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बात मैं बताना नहीं चाहूंगी, हाँ, ज्यादा तो मैं समय नहीं लूंगी। इतना कहकर मेरा वक्तव्य को शेष करती हूँ। Dhanyawad, Kavita Singh. And you can see the confidence in her. I don't have to say anything more. And how she specifically stressed that if we give them the knowledge, it can change their life, change the way they are seeing themselves. The identity has changed. She is no more the wife of somebody or the daughter of somebody. She is she. That is something which is truly amazing and inspiring. Thank you, Kavita Singh. Now, we have another farmer again who is associated with HEFA International, Fulamamani Hembram. I'm sorry if I'm not pronouncing it right. Uh, so she and I again before she speaks, let me give a small introduction about her. She embodies the spirit of empowerment as a heifer trained community agro veterinary entrepreneur. Cave from Musakhai village in Mayurbhanj. She tackles challenges head on, serving as a vital resource for rural communities. Through her dedication, she equips smallholder farmers with essential veterinary services, fostering improved animal care and paving the way for greater economic prosperity. So let's welcome uh, Fulamanin Hemram, Cave, Odisha. आप अनम्यूट करना है आपको। अनम्यूट करो तो। कौन तो? सभी सर और दीदी को मेरा नमस्ते। मैं फुलमणि हेम्ब्रम, गाँव मुसाखाई, ब्लॉक उदला, जिला मयूरभंज के रहने वाली हूँ। मैं जब 7 साल को शादी करके यहाँ आई मुसाखा गांव को, मेरे पति का नाम है सुकुल हेम्ब्रम। तो मैं डालिम नाम के एक दल में जुड़ा। वहाँ मुझे संपादिका के रूप से काम मिला और खाता पत्र का काम मेंटेन करता था। बैंक के सिवा में बाहर कहीं जाता नहीं थी, क्योंकि बाहर के बारे में मुझे पता नहीं चला था कि बाहर क्या होता है। और उसके सिवा कुछ काम धंधा ही नहीं करती थी, सिर्फ घर का काम धंधा ही संभालती थी। और मेरे पति किसान हैं, इसलिए सिर्फ मैं खेती बाड़ी के काम ही करती थी। जब 2015 साल का हाइपर इंटरनेशनल ने सभी दल को ट्रेनिंग दिया, आधारशिला, किचन गार्डन, एसएचजी मैनेजमेंट, बैकवर्ड पोल्ट्री, आईएम ट्रेनिंग हमारी दल को भी मिला। और आधारशिला ट्रेनिंग में उन्नत पशुपालन नाम का एक ट्रेनिंग था। तो उस ट्रेनिंग को सुनकर, उसके बारे में जानकर मैं देसी मुर्गी का पालन और बकरी की पालन में ध्यान दिया। और मैं सोचा कि हम तो पहले रखते थे, घर में भी पालते थे मुर्गी और बकरे को, लेकिन हम इनकम के तरीके से नहीं रखते थे, उसका जत्न नहीं लेते थे। जब हमें पता चला तो हम बिजनेस के रूप में पालन करना शुरू किया। और मैं बहुत अच्छी मुर्गी पालन करती थी। और सब देखकर सभा ने मुझे पूछा कि तुम, फिर उस टाइम हाइपर इंटरनेशनल ने कैप ट्रेनिंग के लिए लोगों को चुनता था। तो उस टाइम सभा मुझे पूछा कि तुम कुछ करना चाहते हो, कैप बनोगे, ट्रेनिंग लोगे? तो मेरी आग्रह थी मैं कुछ करूं, खुद जानने के बाद भी मैं कुछ लोगों को बता सकूं। इसलिए मेरी आग्रह को देखकर सभा ने मुझे कैप चयन किया। और कैप चयन होने के बाद मैं बारीपदा अंबिका होटल गई। वहाँ मुझे ट्रांसफॉर्म प्रोजेक्ट में 12/9/2022 को 22 से 14/9/2022 तक
बायोसिक्योरिटी मेंटेन कर सकते, कैसे हम देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं, उसका ट्रेनिंग मिला। उस ट्रेनिंग में दवाइयाँ, टीकाकरण, यानी कि हम किस टाइम में कौन सा वैक्सीनेशन दिए मुर्गी को, और किस टाइम में रोग आता है, उसका घर डिजाइन, उसका खाना पीना, रहना सहना, उसका मार्केटिंग, तो एक चीज को हम कैसे छोटा से बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा होने के बाद हम कहाँ बेचते हैं, क्या करें, और सब के बारे में हमें बता दिया गया। तो वहां से लौटकर मेरी अंडर के, मेरे पंचायत के अंडर में मुझे 12 SG, 5 गांव में 12 SG मेंबर के 134 लोगों को ट्रेनिंग दिया मैंने। मैंने जब सुन के आए थे और सब उसको अच्छे से समझा, उसके बाद उस महिला में भी परिवर्तन आया, और इस वक्त उस महिला में भी बहुत लोग अच्छी मुर्गी का खेती करते हैं। तो 134 SG माँ का करीबन 2000 से 3000 मुर्गी है। मैं सुबह मैं शाम जाती हूँ, हर रोज शाम जाती हूँ। शाम के टाइम में मैं उसको कभी मेरी हो जा पड़ती है कि मैं उसको कृमि का दवाई दूँ। फिर मेरे टाइम आता है कि मैं उसको टीकाकरण दूँ, लासटा, रानीखेत रोग का जो कहते हैं, और फाउल पॉक्स, ये सब देती हूँ। तो वहां से मुझे या महीने को 6 से 7 हजार मिलती है। और उसके बाद भी मैं खुद भी अपने घर में देसी मुर्गी का पालन करती हूँ। वहां से महीने को मुझे 1 से 2 हजार मिलती है। और गांव में मेरी हरी सब्जी की बाग है, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, वहां से भी मेरी महीने को 2000 मिलती है। और मैं जो तालीम देती हूँ ऐसे के माँ को, बायोसिक्योरिटी मेंटेन के माध्यम से हम कैसे देसी मुर्गी का पालन करें, उससे भी मुझे कुछ इनकम हो जाता है। इससे मेरी गुजरान, घर परिवार की गुजरान बहुत अच्छे से चलता है। मेरी 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। मेरी बड़ी बेटी 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है इस साल को, 2024 को, और मेरी छोटी बेटा 6ठी कक्षा में पढ़ती है। तो उसकी पढ़ाने के खर्च भी मैं दे सकती हूँ। पहले मेरी कोई काम धंधा नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि घर परिवार को चलाना और मेरे बच्चों को पढ़ाना। और अभी मुझे एक स्कूटी भी मिला है कि मैं बहुत कम समय में एक गांव से दूसरे गांव को जा सकती हूँ। और मैं आगे, और इस वक्त तो हमारी आज का बड़ा घर है, लेकिन मैं उम्मीद रखी हूँ कि मैं और आगे भी बड़ा इनकम करूंगी। और हमारी एक तालाब है, तालाब में मछली का भी खेती करूंगी, उसके साथ हरी सब्जी की खेती भी बढ़ाऊंगी। और जब मेरी मुर्गी संख्या इस वक्त कम है ना गांव में, 2000 से 3000 है, उसे मैं बढ़ाऊंगी। और मेरी इनकम वैक्सीनेशन और डिवर्म से भी थोड़ा ज्यादा ज्यादा आएगा, तो मेरे घर परिवार को चलाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से परिवार चला सकती हूँ। और इसके सिवा भी मेरी पति एक किसान तो है, हम खेती बाड़ी में भी हर साल को धान बेचते हैं। और धान बेच के भी हमें साल में 20 से 30 हजार आ जाती है। उसके बाद भी मेरी पति मिस्त्री का काम करते हैं, वहां से भी हमारी रोजगार होती है। तो हम इस वक्त बहुत अच्छे हैं, अच्छे जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमारे पास गाड़ी नहीं थी, घर नहीं थी, हम अच्छे खा नहीं सकते थे, अच्छे पहन नहीं सकते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मेरी बेटी बेटी को इस छुट्टी में कंप्यूटर पढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद में उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे देखकर, मेरी अनुसरण करके और एक महिला सक्सेस बने, और मैं उसे पूरी सहयोग करूंगा कि उसे आगे बढ़ाऊं और अच्छे तरीके से समझाऊं। और इसलिए मैं हाइपर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं सिर्फ एक घर वाली थी, एक पति थी, एक माँ थी। तो मैंने मुझे चूज किया और हाइपर ने मुझे ये परिचय दिया
मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मेरी भी एक पहचान बन पाई। मैं अब जिस गांव में जाती हूँ मुझे हर कोई पहचानता है, लड़का हो या लड़की। और मुझे जाते समय भी पूछते हैं कि दीदी मेरी मुर्गी को ऐसा हुआ है कि कौन सा दवाई दूँ, कब दूँ, क्या दूँ दीदी, आप आएंगे क्या? ऐसा कॉल करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं दूसरों को बांट सकती हूँ, कि मैं अपने लिए जो परिचय बनाई, पहचान बनाई, और दूसरे भी कर सकते हैं। ये है पर प्लेटफॉर्म को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे और भी आगे बढ़ाएं, ऐसा भी और तालीम दिए, ताकि मैं और कुछ लोगों को भी बांट सकूं, सभी लोग को, और मुझे आगे भी ले चले। मैं हाईपर टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यातायात जाने आने के लिए कम समय में एक गाड़ी भी दिया और मुझे पहचान भी दिया। जब मैं प्लस टू में पढ़ाई करती थी उस वक्त तो मैं सोचती थी कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि मुझे खुद जानने के बाद दूसरों को सिखाना बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा ही मौका मुझे दिए शायद भगवान ने, कि मैं आज खुद की पहचान दे पाई और कोई मुझे पहचानता, और मैं खुद को खुद जानने के बाद भी दूसरों को उस ज्ञान को बांट सकती हूँ, उसको भी सिखा सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं इतना बोलकर मैं गाड़ी का यहाँ ही रब करती हूँ। थैंक यू मैम। I think we should probably all unmute and give her an applause so that she can hear that what. नमस्ते। That was truly inspiring, and really, no words for that. To that how things have changed for her with the right knowledge and right access to resources, and how she has changed her identity, and now she's training more women, and how she has become the go-to person in the place where they can come and ask her questions. So that is something really inspiring. And thank you, Fulamani, to share your story with us, and you keep on inspiring others. Uh, let's on that note, let's welcome our next speaker, Mr. N.K. Rajavelu, who is CEO Crop Protection, Godrej Agrovet. So welcome, Mr. Rajavelu. I hope you are here. Yes, good morning. Yes. Yes, thank you. Good morning. Good morning. So you already heard how our women farmers and how with right access to knowledge and resources, they are changing lives, not only theirs, but that of the others. So from Godrej Agrovet's point, are there any activities that Godrej Agrovet is doing, or are they planning to do something along the same lines as what Heifer is doing? And what are your thoughts? Can we empower them with the right information so that they can change their lives, drive in rural prosperity? Mr. Rajavelu. And again, one more thing, sir. If you want, you can speak in Hindi, because I mean for the other speakers as well, because we have some farmers here. So maybe you can combine English and Hindi, or if you want, you can speak in Hindi as well, so that we can understand what is being. So I think first of all, thanks for inviting me for this meeting. I think it's a great honor to be part of this meeting and representing Godrej Agrovet. And the two stories what we heard are truly inspiring. But I would speak in English because my Hindi is really bad, so pardon me for that. But I'm sure that you will be able to bridge that, when you speak. And I want to apologize to all the speakers here that I can't speak in Hindi fluently. But I think you started the conversation today morning about how the struggles that Indian women are having in agriculture, and you rightly said almost 80% of the people in rural India are dependent on agriculture. And it's, to be precise, it's like at 84%. I have some statistics in front of me. And globally, if you look at, almost 400 million women are engaged in the farm work. And one thing that we all agree and look at is like, if women are empowered, everybody is accepting that the productivity of the farm can increase multifold. A study says in the developing countries alone, it can go increase by 25 to 30%.
which is what the need are for the developing countries. And I must say that I have traveled several countries, and the way the women contribute to the agriculture, I think in India we have a great potential to do that. And I think the way we can change and make an impact in this country is quite important. You also mentioned that the male farmers move to urban areas for some better opportunities. But imagine if we can give all the essential resources like seeds, fertilizer, and everything to the women. I think they can do wonders in this. From a GVAL point of view, Godrej Agrovet point of view, I think before I get into that, the already we have programs like drone Didis by the self-help groups. 15,000 drones has been deployed, and that is one thing that is going very well. And we are very proud of that, and we are working on it as well. But let me be very specific. I think last week we had a entire management meeting at Godrej Agrovet, and I'm very, very proud to say that we have tied up last week with Agricultural Skill Council of India and the Future Agricultural Leaders of India, FALI, and we have our Godrej Good and Green team, which is known for the CSR activities. We have committed to train and nurture 1 lakh women in this sector for better employment opportunities and economic upliftment. That's the commitment from the management. We have initiated the program last week. We have tied up with these 2 organizations. And when we released this news, we have calls from other like-minded organizations. They are approaching us. And I think next week I'm going to have a discussion with one more organization. And we are partnering as to make sure that our target is minimum of 1 lakh women we are taking into account, that we will train them and we'll make sure that they have get a better employment opportunities and economic upliftment. I personally look after the crop protection business, and I believe that I'm the one who will have a more contribution in GAVL. So I'm personally committed on that. I'm sure that this is one of the initiatives that Godrej team is taking it seriously, and all are committed. You will see a lot of action and more things that is coming over here. We are also looking at partnering with other companies. Like, for example, already the fertilizer companies are doing a good role. They are trying to do sort of, in terms of giving them a distribution of nano urea or pesticides through the self-help groups. We are also looking at drone as one of enabler for our business. But I think that enabling the drone business through the women in agriculture would also be an opportunity for us. So I can conclude and say that Godrej is committed, and I am committed that our target for the year 24-25 would be 1 lakh women to be trained, and we are going to partner this with 2 like-minded organizations with our own Godrej Good and Green. Very happy to be part of this, Anjana. Excellent meeting and excellent webinar, I would say. Thank you, Mr. Rajvelu. Thank you for joining us, and thank you for letting us know that what are the activities of Godrej, especially the intervention of training 1 lakh farmers. So that is great. And if you have gone through our previous edition of Agriculture Today, we have covered. I mean, it is based on women in agriculture, and we have a special feature on drone Didis. Yeah. So please go through it and let us know what you think about it. Absolutely. So thank you, and let me invite Mr. Amit Joshi, CEO Palladium India. So from your perspective, you have worked with a lot of smallholder farmers, and the organization is doing their job. And how has been your association with women farmers? Do you think they are more capable to absorb the new interventions? They are more receptive to new ideas, and how we can empower them to improve not only their livelihoods but that of the entire agriculture scenario. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you are. In fact, that's a fantastic panel, and allow me to address to the 2 inspiring speakers, ladies I heard in Oriya. Namaskar, Kavita Didi and Phulamani Didi.
in fact ओडिया रे कहय चाहूची आपण माने मोर इंस्पिरेशन एज इन आपनकर स्टोरी सुनी कि इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस आपण हमकु प्रेरणा दउचंदी rather than आमे आपण को प्रेरणा दबु सो थैंक यू वेरी मच आपण को धन्यवाद and thanks Anjana for setting this context. In fact a couple of hours back I was attending a corporate session on again Women's Day. We highlighted challenges, policy level changes, and here I'm seeing some of the outcomes. So it is heartening to see that as Palladium been in this business since last 60 years, working across 90 countries. Agriculture is our forte, and we are very focused on gender inclusive agriculture. I would draw upon couple of outcomes because here आज हम इधर थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हमने क्या अचीव किया है एंड हम कैसे उसको इंस्पिरेशन बना सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ पॉलिसी हमने क्या किया है एंड उससे कुछ अगर हम सबको प्रेरणा मिल सकता है, दैट इज गुड. हमने एक महाराष्ट्र में जब पैलेडियम ऑलमोस्ट 5 साल पहले फोकस किया कि इंडिया एज ए ज्योग्राफी करे, सो हमने एक महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम किया ऑन ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स. अराउंड 3 लाख फार्मर्स वर ट्रेन्ड. एजेंडा नहीं था कि उसमें वुमेन फार्मर्स टारगेट करें, बट बाय द इथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन around 54% of that target was women. And it went into Asia Book of Records, wherein हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ट्रेन किया, जो हेमरम मैडम आप और कविता जी बोल रहे थे कि आपको कैसे मुर्गी पालना सिखाया, कैसे सिखाया, वही चीज़ हमने किया बट एट ए लार्जर स्केल. एंड आई एम प्राउड दैट उसमें से बहुत सारे फार्मर्स आर सस्टेनेबल. कुछ तो बहुत बड़े फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं. उस वक्त एपीओ वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं था. एपीसी बन गए जो दुबई और अदर मार्केट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं. सो दैट इज वन इंस्पायरिंग एग्जांपल विच हमने कुछ किए हैं एज इन. एंड व्हाइल प्रोग्राम 2019 को खत्म हो गया, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर दैट. रिसेंटली आई नो इस बार का थीम है कि इन्वेस्ट इन वुमेन, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी बढ़े. एंड बहुत challenges हैं at this point of time in terms of, and which can be addressed through education. You have a live example of Madam Hemram and Kavita on that. We and Hemram Madam, I forgot आपका कौन सा एज इन आपनकर को ये थिला तालुका थिला, बट हाँ, we are doing something in मयूरभंज रे हम गोटे काम करछु. We are doing something in मयूरभंज under NABARD. We are the CBBO. मयूरभंज रो आई थिंक से ब्लॉक रो ना होची सुलियापड़ा ब्लॉक, मयूरभंज सुलियापड़ा ब्लॉक. We have built capacity of FPO, and we term it as Mayurbhanj to Paris. They have moved from their traditional cereal farming जो कर रहे थे, उससे मूव करके कमर्शियल फार्मिंग में गए हैं, and they are doing commercial farming of lemongrass. And I'm proud to say, अच्छा लग रहा है बोलने के लिए कि सुसुनम एग्रो एपीओ का नाम है. They are now catering to international market in US and France. And there are set of 512 ट्राइबल फार्मर्स, 512 ट्राइबल फार्मर्स हैं जो अभी 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 करोड़ का बिजनेस करें. So that is the power when we invest in women, irrespective it's a program by us or Heifer or Godrej. And ऐसा ही अगर we contribute to our society, probably to bring in more productivity. And ऐसा नहीं कि 512 और 13 जो ट्राइबल फार्मर्स थे उनको खाली बेनिफिट हुआ, इनडायरेक्टली उनके साथ 1500 फार्मर का बेनिफिट हुआ. जो कविता जी आप और हेमरम मैडम आप बता रहे थे कि मैं कुछ करूं एंड उसके साथ में बाकी लोगों को जोड़ूं. सिमिलरली एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है PMFME, जो प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को फोकस करता है. एंड वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक स्टोरी कॉल्ड गो ऑरेंज, जहाँ पे एक छोटा FPO ग्रुप है, शिव ब्रह्मा कुमारी ग्रुप. They are now known as the turmeric queen in their village in Jajpur, wherein with the financial assistance of the PMFME scheme, they have not just made the product more widely available, but they have bought in more machinery. They have bought in grinder, packaging machines, and with that grant, near about and they are now catering to the nearby markets and the state market also. And it is just not one story. There are so many such stories of 900 or 15 SHGs we are catering.
And the story doesn't, and ऐसा नहीं कि 84% of our workforce in agriculture is women, so the stories revolve around that. Globally, the scenario is the same. In fact, we are catering something in Indonesian Prisma, wherein it is not the beneficiaries, we are in fact training the microfinance institution that how exactly you would finance smallholding farmers and especially women. So I'm sure all of us from the sector, हम ये सब sector से हैं, and we have two fantastic beneficiaries here, would agree that the more we invest in women, whether it is agriculture or any sector for that matter, the more it is shifting toward a better economic growth. And what a fantastic day today! I would like to end my pointers here with the fantastic coincidence of celebrating Shivratri today, and with women. We know the power of Adi Shakti and Ardhanariswar, and which embodies that it is the unity of the two sides which makes it more powerful. So with that note, I live up to all the fantastic panel here, and again dhanyabad Kavita madam and Hemram madam amku prerito kariya paiki. Thank you very much everyone. Thank you, Mr. Amit. That is very true what you said, that investing in women, that is something, especially this a theme of this year, that can bring about changes, and the examples are there right in front of us. So next, I would like to welcome Mr. Haseem Zaidi, who is Corporate Communications at India Syngenta. Welcome, Haseem. So you have been working with Syngenta for a very long time, and you have seen how smallholder farmers are trying to make the ends meet, and how despite many attempts, they still have not crossed that line where they can say that they are okay with the incomes that they get. And then we have the examples of Philima Mani, and then we have the example of Kavita Singh, who with their limited resources, they're making a huge difference. So from your point of view, what can we do more? Thank you, Anjana, and thank you to all the lovely women for joining in on this special day, and to all the strong and empathetic men who have taken out time to join on this occasion. So before answering your question, first thing which I will express as my personal view and my viewpoint is that empowered women empower women. So like we have women farmers, I'll urge them to say that let's create a chain of empowered women who pull each other and who take each other to another level. That will be our own effort. हिंदी में बोल दूं उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह से अभी नहीं समझ सक रहे हैं, कि जो सशक्त महिलाएं होती हैं और जो दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना चाहती हैं, मैं उनसे चाहूंगी, जैसे कि बहुत अच्छा लगा सुन के अभी इससे पहले जो महिलाएं बोली उनका, कि किस तरह से उन्होंने साधनों की कमी में, हर चीज के अभाव में, जैसे भी हुआ आगे बढ़ते हुए अपनी एक पहचान बनाई और अपने लिए काम किया बजाय सबके लिए काम करने के लिए। अधिकतर यही होता है कि महिलाएं जो हैं सारा काम करती हैं, लेकिन उनको कहीं से भी उस काम की पहचान नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी पहचान के लिए कभी काम नहीं करती। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, और उसी के साथ साथ उन महिलाओं से ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपनी पहचान बनाई, आप आगे और लोगों को लाइए कि वो अपनी पहचान बना सके, और इसी तरह से हम एक कड़ी बनाते चले जाएं सशक्त महिलाओं की, जो एक दूसरे को ऊपर उठा सके, ऊपर पहुंचा सके, और एक दूसरे के लिए तालियां बजा सकें देख के कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे. Now, coming back to my point, basically on women from rural background, and thank you, Anjana. This is my favorite subject. I feel from my heart about it. So whatever I speak will be from my heart. So as we all know that women play a significant role in Indian agriculture, and they contribute extensively to various aspects of farming and rural livelihoods. We all have heard our women panelists talking on what they are doing and how they are doing. But where is the gap? Like, the workforce contribution is around 65 to 80% of rural women in India, and they are engaged in agricultural activities from sowing to transplanting to weeding to harvesting and post-harvesting activities. They also contribute significantly to crop cultivation and livestock management. Our women panelists
have told that, and that is a very labor intensive job. Now, where is the gap? The gap is where I started asking our women, colleagues, and of course, women from the ground, that where we lack. We lack is that all the work done by women is in informal way. Either they are wives supporting their husbands, or they are, helping their family, their children with that household. This is not formalized. So the challenge is that agriculture as a job needs to be formalized, and we at Syngenta India are dedicatedly working towards it, and I'll tell you how. But let me also tell you the challenges. What are the challenges? These women don't have access to land and property rights, so which is very important. So we have to make a public and private partnership to educate them about their rights and let them speak for themselves instead of us speaking to us on their behalf. Another point is financial inclusion and access to credit, and which is very important. And then adoption of technology and innovation, market access and value addition. Then being supportive of policy frameworks and institutional support, which I have earlier also highlighted. So how we at Syngenta India, and also we take a lot of initiatives through our CSR wing, where we empower women. So the first part towards women empowerment is educating them, making them aware. So making them aware that agriculture also can be a formal job, and that can be a source of income instead of just being a support. So that is the first part we are doing. Now, aligning with the goal of Prime Minister Narendra Modi ji and our Honorable President of India, who are talking about women empowerment, especially empowerment of women from rural background, we at Syngenta India have rolled out many schemes, including training of women drone pilots. This is done through our CSR division at Syngenta as well, and through our Syngenta Foundation. Because when we will provide them this kind of training, then only we'll be able to empower them. We have the woman first drone pilot from Haryana, Nisha Solanki, as one of our employees who's leading this project, and who's empowering women. मैं हिंदी में भी बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं सिंजेंटा इंडिया में, जिसमें हमने एक पहल की है कि हम महिलाओं को एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देंगे, जो हमें लगता है बहुत जरूरी है। ये हमने ऑल ओवर इंडिया में पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसकी ट्रेनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सिंजेंटा फाउंडेशन से और सिंजेंटा के CSR इनिशिएटिव से। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जिसमें कि हम सरकार के साथ मिलके बहुत सारी योजनाओं में उनके साथ काम कर रहे हैं कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकें और कैसे उनको ही उनके साधन देके उनको उड़ान भरने के लिए प्रेरित करें। उड़ान वो खुद भरेंगी। मैं हर बार यही कहना चाहूंगी, हर सेंटेंस मेरा इसी पे होगा कि सपोर्ट होगा, लेकिन एम्पावर आपको खुद होना है। सो ये सारे इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, सिंजेंटा इंडिया की कैपेसिटी में, कोई भी पार्टनरशिप जो महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी होगी और महिलाओं को आगे लाने के लिए अच्छी होगी, हम हमेशा तैयार हैं और पूरे संकल्प के साथ हम उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। एंड विद दिस आई थिंक आई हैव टेकन एनफ टाइम। आई विल टेक your leave, and I'll thank you all for having me over. Thank you so much. Happy Women's Day. Thank you, Tehseen. That was really wonderful. I hope I'm audible. Yes, Anjana, you are very much audible. I thought it was getting stuck in between. So thank you, Tehseen, so much. And it was really, truly, as you pointed out, what are the gaps that we have, what we have to make sure that women get these. And we have to, as you said, that we can give this support, they have to get empowered. So we have to look out for each other. Women should look out for each other. And after this beautiful address, I would like to welcome another farmer member that we have with us. She is Nutan Devi. She's Board of Director, FPO,
Kamala FPCL Bihar. Let me give you a brief introduction about her. Nutan Devi is a dynamic and a visionary leader serving as a board of director of Kamala Farmer Producer Organization, which is an FPO in Bihar, with a strong focus on business development and gender inclusivity. She spearheads initiatives aimed at empowering women in agricultural value chains, particularly goat rearing. So let us welcome Nutan Devi. जी नमस्ते मैम, मेरा नाम नूतन है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। और मैं थोड़ा एफपीओ से पीछे बात करना चाहती हूँ। जिस समय मैंने इस कंपनी में आई हूँ उससे पहले मैं सामुदायिक एसएचजी से जुड़ी हुई थी, हाइपर इंटरनेशनल इंडिया के सहयोग से, जो एसएचजी का नाम वैष्णवी है। और समुदाय के सहयोग से मैंने कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बीओडी के पद पर काम कर रही हूँ। और कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का हाइपर इंटरनेशनल के सहयोग से और नाबार्ड द्वारा 22 फरवरी 2016 में रजिस्ट्रेशन किया गया। और जो 6040 परिवारों को, जो हाइपर द्वारा 6040 परिवार है, उसके बीच में ये कंपनी काम कर रही है। हमने हाइपर संस्था के सहयोग से उन्नत बकरी और उन्नत कृषि प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया, जो उन्नत कृषि का सहयोग से कमला कंपनी के जितने भी महिलाएं हैं आत्मनिर्भर बन रही है। और जो आज के डेट में 2016 से हम लोगों ने काम किए हैं, उसमें अभी तक 3814 महिला शेयर पूंजी के रूप में है, जिसका शेयर कैपिटल 24,38,230 रुपया है अभी तक कंपनी में। और ये कंपनी जो है सो खास करके उन्नत कृषि प्रबंधन और उन्नत कृषि के रूप में काम कर रही है। और जहाँ ये काम कर रही है वहाँ का महिलाएं जो है सो लघु सीमांत है। खास करके हाइपर इंटरनेशनल इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें जितने भी महिलाएं हैं लघु सीमांत के महिलाएं हैं, और उस महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और जो आज के डेट में महिलाएं अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता में है और जो चाहती है वो कर रही है। क्योंकि शुरू में जब मैंने ये 2016 में कंपनी में आई, तब से बहुत सारी परेशानी हमको झेलना पड़ा। जो महिलाएं कंपनी में डायरेक्टर है वो क्या काम करेगी या नहीं करेगी, घर से भी बहुत तरह का जो है सो परेशानी होता है, अगल बगल समाज से भी बहुत तरह का जो है सो परेशानी हो रही थी। जो महिला है कहाँ जाती है या ट्रेनिंग लेती है कि कहीं किसी के साथ जाती है, मतलब तरह तरह का बात सुनने का मौका मिलता था। लेकिन आज के डेट में वही समाज वही परिवार हमको मदद के रूप में जो है सो खड़ा है और तत्पर है। जो नहीं, ये जो काम कर रही थी, ये जो अगर परेशान की है, अपने लिए नहीं अपने के साथ साथ जितने भी महिलाएं हैं 3814 उनके लिए भी की है। जो आज के डेट में हमको सरकार के नाबार्ड के सहयोग से कृषि यंत्र का भी कंपनी में जो है सो मिला है। और जनवरी में जो जितने भी महिलाएं हैं उसके बीच कृषि तंत्र से सिंचाई के रूप में क्या मदद हो सकता है, उसके लिए जो है सो हम लोग भी जो है सो काम कर रहे हैं। 2016 से अभी तक हमने जो काम किए हैं कंपनी के बीच और जितने भी महिलाएं हैं इसमें जुड़ी हुई उनके सहयोग से, जो 2,68,61,73,73 रुपया का जो अभी तक कंपनी में लाभ है 8,73,459 रुपया, जो कंपनी में लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ है।
और काज करने की जरूरत है हम लोगों का। जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, घनश्यामपुर मतलब दरभंगा जिला के अंतर्गत 2 ब्लॉक में काम हो रहा है। इसका काज क्षेत्र है सो बहुत बड़ा विस्तार है, जो हम एफपीओ के मार्फत से हर तरह महिलाओं को मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसमें हमको काम करने की जरूरत है। जैसे कि बकरा व्यवसाय है, अनाज का व्यवसाय है, उसको भंडारण करके कैसे एकत्रित करके उसको जो है सो संगठित होकर के मार्केटिंग के ओर ले जाए, उसमें हम लोग थोड़ा असफल हो रहे हैं। इसमें काम करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हम लोगों का माल गोदाम का व्यवस्था नहीं है, उसमें सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि घनश्यामपुर ब्लॉक और किरतपुर ब्लॉक है, उसमें क्या है तो किरतपुर ब्लॉक में बाढ़ रहित क्षेत्र है। उसमें गाड़ी का यातायात मतलब लगभग जो है सो साल में 9 महीना पानी से ही भरा रहता है और 3 महीना जो है सो सूखा रहता है। तो उसमें जैसे कि उस साइड में अगर काम करना चाहते हैं तो परेशानी होता है, जो कैसे काम करें। और ज्यादातर महिला जो है सो बकरी पालन कर रही है, तो आपदा के समय में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। जैसे उसके चारा के लिए, उसका खान पान पे जो है सो पूरा भरपाई नहीं हो पाता है। और खेती जहां तक महिलाएं करती है तो जो उसमें फसल आता है उसमें पूरा भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है सो वहाँ दिक्कत है, तो उस पे हम लोग जैसे सोच रहे हैं वो काम करेंगे। जैसे पौष्टिक बकरी चारा का उत्पादन मिल हो जाए तो हम उसके लिए जो है सो उस साइड में जैसे कि बाढ़ रहित एरिया है तो उसमें हम आसानी से उस समय को पहुंचा सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। और खास करके जो है सो ये महिला की कंपनी है, और महिलाओं जितने भी महिला है 3814 सिर्फ महिलाएं ही है। और जितने भी महिला है और निष्ठा पूर्वक काम कर रही है, जैसे बकरी पालन हुआ और खेती बाड़ी उन्नत कृषि खेती हुआ, तो हम लोग एफपीओ के माध्यम से जो काम करते हैं तो उसको समय समय पर जैसे शीर्ष हुआ तो वो देने का काम करते हैं। अभी जो हम लोग वर्तमान में जैसे कि 2 सीजन का होता है सब्जी खेती का, एक तो हो गया बरसाती और एक हो गया सूखा के समय में। अभी हम लोग ने एफपीओ के माध्यम से जो सब्जी का बीज दिए हैं समुदाय के बीच में कंपनी के माध्यम से, तो मॉडल खेती के रूप में अभी हम लोग काम करवा रहे हैं। खास करके इसमें जो है सो कर्णेश सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने ने मॉडल के जी के रूप में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया, और वो प्रशिक्षण सफल हो रहे हैं, जो समुदाय के बीच इस तरह का उन्नत तरीका का खेती कर रहे हैं। ये करने से एफपीओ का भी फायदा है और महिलाओं का भी फायदा है, क्योंकि महिलाओं जब अपने उन्नत तरीका से लगा रही है तो उसको भरपूर मात्रा में होगा, और अपने खाने के अलावा जो भी कुछ हो सकता है तो वो बेच भी सकते हैं। तो ये भी है हमारे एफपीओ का। धन्यवाद नूतन जी। खास करके मैम ये है, जो हमारी कंपनी में जितने 3814 है कुल महिला ही है, और महिलाओं की कंपनी है, और ये शेयर द्वारा सीमित कंपनी है। तो जैसे शुरू शुरू में हमने काम किए तो बकरी पालन पे काम किए, मतलब शुरुआत जो है सो बकरी पालन पर भी हुआ था, और बकरा जो है सो व्यवसाय के रूप में यानी खरीद बिक्री के रूप में एफपीओ शुरू की।
और धीरे धीरे जो है हम लोग जो है सो अनाज और सीड्स का भी प्रोवाइड करने लगे इस एफपीओ में। जो आज हमने अनाज का जैसे बीज का मतलब एफपीओ के माध्यम से जो समुदाय के बीच में कंपनी के माध्यम से दिए हैं, तो 68,18,460 रुपया के दिए हैं, जिसमें एफपीओ का बिजनेस 36 मतलब 3,62,811 रुपया हुआ है व्यवसाय के रूप में। फिर अनाज जैसे ने कम्युनिटी से लेकर के एफपीओ के माध्यम में बड़े मार्केट तक पहुंचाने का काम किए हैं, तो 20,73,430 रुपया, जिसमें 42,723 रुपया का कंपनी में व्यवसाय के मोड़ में लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन हम मैम हाइपर संस्था को आभारी हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं जो निस्वार्थ भावना से जो महिलाओं के बीच में काम किए हैं वो दूसरा संस्था नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं अपना बात को समाप्त करती हूँ, और कुछ त्रुटि हो गया हो तो हम क्षमा भी चाहते हैं। Thank you, Newton ji. Thank you, धन्यवाद. And it was how her decision, I mean her observations regarding what they have done, and the entire thing, that was really great. It shows they actually know what they're doing. They are truly into it right from the beginning. So thank you, Nutan ji. Next, I would like to call upon another women farmer, Ms. Gunja Das. She's from Bihar, and she's the community agro-veterinary entrepreneur, Cave, Bihar. She embodies the spirit of empowerment as a Heifer-trained cave member, Hariram Tola village block, Putni district, Muzaffarpur. She tackles challenges head-on, serving as a vital resource for rural communities. Through her dedication, she equips smallholder farmers with essential veterinary services, fostering improved animal care, and paving the way for greater economic prosperity. Let us welcome Ms. Gunja Das. Ms. Gunja Das, I think she was here before. She must be, she left. So let me invite our next speaker, Mr. Shawan Ali. He's the country manager, PepsiCo JDA. So, Mr. Shawan Ali, you're here. Yeah, I am here, Anjana. Welcome, Mr. Shawan. So, Thank you. You have heard what our panelists were saying. All of them were pretty much, they had the same point of view regarding what changes women can bring if we give them the right thing in their hand. If we give them knowledge, if we give them resources. You can see how the farmers who have just spoken before you, how dedicated and passionate they are, and how knowledgeable they are. So from the point of view of your organization, PepsiCo, I think PepsiCo is also doing some amazing work with women farmers. So please let us know what are the things that PepsiCo is doing, and what are your observations? Yeah, sure. Thank you, Anjana. And pardon because I'm in a network unstable area, so I'll be camera off. I won't take much of the time. पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ फूलमणि दी और बाकी जो हमारे फार्मर्स थे, कविता दीदी, आपने बहुत अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरीज अपना बताया. So I'll just quickly brief about the project, what the project is, and how we are also helping the women farmers in India. So GDA is basically Global Development Alliance. It's an alliance between USAID and PepsiCo. And this alliance started in June 2020. And this alliance is running in 4 countries, India, Pakistan, Vietnam, and Peru.
Basically, ये जो alliance है इस project के through, we are demonstrating that how full engagement of women can drive both business and social outcomes. अगर और simple words में अगर हम कहें तो इस partnership का जो overall objective है, that is to make a business case for women's empowerment within the PepsiCo potato supply chain. Also, जो business needs हैं PepsiCo की, how they are aligning with these women empowerment initiative. This project also caters to that, and how gender can be used as an enabler for business success. This project is helping in addressing this thing also. And lastly, how we can influence the industry. So I've heard other fellow industry members like from Syngenta, Godrej, they are also working in the similar space on women empowerment. तो हम दूसरी इंडस्ट्रीज में कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट. सो इन इंडिया द ग्लोबल डेवलपमेंट अलायंस प्रोजेक्ट इज वर्किंग in UP and West Bengal. In UP and West Bengal, we have been training women in agronomy practices. We are introducing new technologies. We are also introducing new job roles for women. हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन को कैसे जो ट्रेडिशनल उनका रोल है, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे से पहले एक स्पीकर बता रही थी कि कैसे कुछ ट्रेडिशनल काम है, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग या फिर ग्रेडिंग या फिर सीड कटिंग, उसमें ही वुमेन लिमिटेड है. लेकिन हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि स्प्रेइंग जो है, जो कि एक मैन डोमिनेंट स्पेस है, स्प्रेइंग, उस एक्टिविटी को हम कुछ फार्मर फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली टूल्स के माध्यम से कैसे वुमेन्स को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि वो भी स्प्रेइंग एक्टिविटीज ट्रेन कर पाए फार्म पे. सिमिलरली हम लोग ड्रिप इरिगेशन मेंटेनेंस पे वुमेन को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि वुमेन अपने फार्म को 1 एकड़ 2 एकड़ फार्म को पूरा जो मेंटेनेंस है ड्रिप इरिगेशन का, उसको वो खुद हैंडल कर रही हैं. सिमिलरली वी आर आल्सो ट्रेनिंग वुमेन ऑन रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें हम वुमेन को वो पढ़ के बोल रही थी ना, इसलिए ऐसा सॉरी. Yeah. So we are also training women on record keeping, जिसमें हम उनको digitally literate कर रहे हैं, जिससे कि जो women है equal partner बन के अपने husband या अपने father का farm पे record keeping पे उनका help कर रही हैं through manual record keeping and through digital record keeping. So till today we have almost trained 1,000 plus women. We are also setting up women friendly gender smart demo farms, जिसमें कि हम लोग कुछ पॉलिसी लेवल चेंजेस भी लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग इफ आई टॉक अबाउट इक्वल वेज, वुमेन जो crèche services हैं, etc. on farms for laborers. So these are some of the initiatives which we are taking under this PepsiCo and GDA USAID project. Basically, we are trying to work and try to make a model within the PepsiCo supply chain to prove that yes, working with women and investing in women. Interestingly, one of the panelists was also mentioning, so our project का जो हमारा नाम है, it is also investing in women to strengthen supply chain. So we are making a case that how investing in women oriented solutions can definitely bring a more business success for any corporate company. So that's all from my side. Thank you everyone, and happy International Women's Day. Thank you, Shaban Ali. Especially I was impressed by the new job roles that PepsiCo was working on, and I was thinking, where were you? Because I was looking for articles, something in which we can introduce some new topics, and this would have been a great addition to our magazine, the new job roles, because women are usually compartmentalized in traditional roles, and it's very hard or difficult when it comes to introducing them to newer roles, some other roles which they have not performed earlier. So that is really good and amazing. Now we'll and thank you, Shaban Ali, for that, for introducing us to that area. Now I think a farmer is back. I saw her right now. Gunja Devi, Miss Gunja Devi was here. I think, is she there, Miss Gunja Devi?
No, ma'am, she's not there. Yeah, for a moment I saw her. Okay, now let's do one thing. Let's move on to the next speaker, and if she comes in between, we can Yeah, she's hear her. she's facing some connectivity issues Oh, on the oh, okay, ground. okay. Yeah, Okay. yeah. But we have some more speakers, so we can wait until then. Next, we can move on to Ms. Udita Sarkar. She's the Executive Director, Grameen Foundation. We had some really interesting talks in the earlier panels too with Dr. Udita. So, ma'am, you have heard, what our farmers have been talking and how confident they are. And we have seen right in front of us, like what are the changes that has happened in their lives. They are planning not only for this season, they have planned the entire life because they're very sure how things are going to work out for them. So with that level of confidence, it's quite easy to say that they can achieve what they want to. And ma'am, you have been working with some millet farmers and all that. And how have been your experience in introducing them to newer concepts and trying to empower them with knowledge? Thank you so much, Anjana, and happy International Women's Day to everybody. It's not only women, it's everybody. Women is only part of the community, and the community belongs to all. So I believe we cannot segregate women. So that is the first thing. And in fact, going by the UN campaign this year, when we talk about invest in women and inspire and inclusion, that is the basic campaign all about for 2024. We have wonderful inspiration even in this platform. सो बहुत अपन बहुत बढ़िया कहले कविता जी फुलमणि बहुत बढ़िया कहले अपन एंड इवन नूतन आपने बहुत अच्छा कहा एंड आप ही लोग हैं हमारे इंस्पिरेशन और आई अग्री वेरी मच विथ मिस्टर शाहवान अली व्हेन ही इज सेइंग दैट विमेन काम कर रही हैं एग्रीकल्चर में पर वो आगे नहीं आ रहा है उनको वो दर्जा नहीं मिल रहा है so that is again inclusion all about so in fact let me in fact bring my organization Grameen into this forum also as I am representing Grameen here and if we talk about Grameen it's all very much it is to us, agriculture, women, and our vision of the organization. As Grameen Foundation, we are a global non-profit whose mission is to enable the poor, especially the women, to create a world without poverty and hunger. And in Indian context, in fact, when we know that हमारे 33% are our cultivators, जो क्या काम करती हैं, और 47% आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स ये महिलाओं की संख्या है ये महिलाओं की संख्या है जो कि आंकड़ा बोल रही है पर सही अगर हम देखें तो ये आंकड़ा से बहुत ज्यादा महिलाएं काम करती हैं जो कि उभर के नहीं आता है and that is the main role of all the players here, starting from Pfeiffer, starting from Palladium, be it Godrej, be it PepsiCo. We all are partners. We all are partners. And I feel that agriculture today is a conduit. It's a platform. They are facilitating us so that we project our stories from the field to the community, to the society. And with my long years of experience, I would say that definitely your topic of empowering women, driving gender equality and entrepreneurship. In fact, Anjana, if you go back, women has always been an entrepreneur. Be it Murgi Palan,
जो कि हमने कहानी यहाँ पर सुनी, women has always been an entrepreneur. She was not recognized. That is it. And with the concept of the SHGs coming into, with the concept of NRLM, which brought a big sea change in our conceptualization, the way we as partners, we as international organization, local CSOs, in fact, ये SHGs का जो it's that they work in mission mode, and in fact, one of the speakers said, Tahsin, I think she said, कड़ी बनानी है. She said, "Buddy." So this SHG Federation or the SHG movement, it has really created a curry, and we all are inspiring stories. वो फुलमनी हो, कविता हो, नूतन हो, गुंजा हो, ऐसे बहुत हमारे केस स्टडीज हैं, हमारे साथ बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये कड़ी के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं. They are inspiring. They are organizations are investing in them, and they are the inspiration to a larger community. In fact, and they are our entrepreneurs. So this entrepreneurship was very much embedded into it. Only the lens has changed, and we are giving focus. We are giving them resources. We are providing with better facilities so that the economic development, the poverty reduction, or ultimately the social progress, it comes into a wider per se, and ultimately they are being empowered. So with all my more than 20 years of experience, I have seen and been worked and have been instrumental for various such initiatives across definitely in our country and in different parts of the globe also, whereby in fact if you see a woman in Mayurbhanj or in say Muzaffarpur or a woman in Burkina Faso, you will not find much of difference, because again the social capital, the education, training, mentorship, networking opportunities, all this hand-holding has to be given to them so that in fact they come to that level, and that is our role. I feel we as leaders, we as facilitators, we are being blessed, Anjana, and even to all the people we are saying that we are being blessed. This is our gratitude that we have this position so that we can inspire others, we can help people empower themselves, and we must continue to prioritize to empower women and create a world where every woman has the opportunity to thrive and contribute fully to the society, so that her, each small, minute contribution also matters a lot. That बूंद बूंद से सागर भरता है. So एक छोटी सी कहानी गांव की, वो in fact one of our speakers said from Mayurbhanj to Paris. So that is the success story. So you all of us, आप जैसे कविता, फूलमनी, गुंजा, नूतन, आप ही लोग हमारी स्टोरीज बनाते हैं. हम आपके तरह स्टोरीज सबको बताते हैं, इसमें खुशी बांटते हैं और हम बहुत प्रसन्न होते हैं. तो आप लोग ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए, ऐसे ही सबको प्रोत्साहित करते रहिए, अपने भी इंस्पायर होइए, दूसरे को भी इंस्पायर कीजिए एंड सशक्त बनिए. यही हमारी शुभकामनाएं होगी. And we have agriculture today to highlight everything, put it together and bring it into the Monde Forum. That's it. Thank you so much. Namaskar. Thank you, Dr. Udita. Thank you so much for the inspiring words. And as you said that about the links of empowered farmers, that we have to hold hands and we have to inspire each other and we have to share the stories with the world, so that, Right. as you said, like farmers from Mayurbhanj to farmers in Burkina Faso, they can
realize that it is possible for them to break एंड that अंजना, ceiling. इनफैक्ट ये कड़ी ना हमारे बीच में भी बननी पड़ेगी. हमारे Very true. खाली ग्रास रूट में बनने से नहीं चलेगा. ये कड़ी हमारे बीच में भी. वी नीड टू जॉइन हैंड्स एंड वी नीड टू Yes. पुल ईच अदर. We as partners of the society and as advocates doing so. Be it corporate, be it international NGOs, CSOs, educational institutes, we all are partners and we need to, in fact, push and pull each other. Very true, Doctor. And thank you so much. Thank you so much Thanks a for lot. sharing your perspective. Let me call our next panelist, Dr. Dipti Rai. She's the Senior Research Associate, Mobius Foundation. So, Dr. Dipti, you have heard, our panelists and their perspective. So everybody has to say the same thing. The identity of women has changed because of certain factors. Earlier, they have to do their works were not recognized. The care economy, the women were never compensated. So, from your point of view, what do you say that what we can do, what has to be done? Thank you, Anjana, and I'm very happy to share my thoughts on International Women's Day. And being an agriculturist, I also find, because I have worked in fields also at ground level also, so still some more work has to be done in the terms of wages. That gender inequality is still there. Like in case of Bihar, अगर मैं आपको बताऊं तो 350 रुपए पर डे जो है वो मैन को मिलता है एंड women गेट ओनली 150 to 200 रुपीज एट द फार्मर लेवल. तो वहां पे इनइक्वालिटी के लिए, जैसे कि तहसीन ने बोला या हमारे दूसरे स्पीकर्स में बोल रहे हैं, चेंज तो खुद लाना पड़ता है. वी आर देयर टू सपोर्ट, पर आवाज उठानी पड़ेगी, उस चेन रिएक्शन को जारी रखना पड़ेगा. तो पहली इनइक्वालिटी वहां पे कि जो बराबर का वेजेस मिले. जितने भी डिफिकल्ट वर्क्स हैं वो, जैसे हमारे पहले वाले स्पीकर्स ने भी बोला, उन्हें दे दिया. रीडिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है, पॉलिनेशन है, वो दिया जाएगा उनको. तो इस तरह की जो चीज है उसको वहां पे ग्राउंड लेवल पे खत्म की जरूरत है. और पहला एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है कविता जी ने बोला था कि महिला मानसिकता में चेंज आया है. मतलब वो सबसे जरूरी चीज है, मानसिकता में चेंज. अ वुमेन शुड सपोर्ट अदर वुमेन, दिस शुड बी द चेंज. और उन्होंने कहा कि हर महिला की इनकम 15,000 रुपया महीना होना चाहिए फूल मनी जी में. तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है कि हम खुद एम्पावर हैं और हम दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं. तो पहला जो चेंज आता है वो घर से ही आता है कि मानसिकता में चेंज आना चाहिए. वो नूतन जी बोल रही थी कि निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है, या हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं. बहुत सारी बातें सामाजिक रूप से भी मिलती है, पर उन्होंने उसको ओवरकम किया और उस निर्णय को लेके वो एक लेवल तक पहुंची और वो समाज में एक उन्होंने स्थान बनाया. तो ऐसी महिलाओं के असली हीरो तो यही महिलाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही हैं. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मोबियस, हम क्या कर रहे हैं कि हम रूट को, मतलब कि उनके फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. एक ज्ञान कन्या शक्ति प्रोग्राम हमने 100 स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें 6 से लेके 8 तक की बच्चियों को लिटरेसी में, लाइफ स्किल्स में, फाइनेंशियल में कैसे दिया जा सकता. सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. तो अभी हमने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है, बाकी जगह हम स्टार्ट करने वाले हैं. और एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आल्सो समटाइम्स वी कोऑर्डिनेट विद नाबार्ड. तो एक बहुत छोटा सा केस स्टडी में सरोरा सलेमपुर की महिलाओं का बताना चाहूंगी, जिनकी रिकॉर्डिंग 2 साल पहले हुई भी थी, 8 मार्च को ही. जो संघर्ष उन्होंने अपने लेवल पे किया, बहुत एक छोटी ट्रेनिंग थी जैविक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की. और वो जो है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने गांव से निकल के किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाए. तो व्हाट वी डिड, वी कोलैबोरेट विद द एक्सपर्ट और हम उन तक पहुंचे. उनको अपने फैमिली लेवल पे प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सारी चीजों को छोड़ के वो हमारी ट्रेनिंग्स में आई. और इंटरेस्टिंगली सास और बहू दोनों एक.
तो उससे हमने जो मैसेज दिया कि नहीं, चेंज तो हो रहा है, वुमेन सपोर्टिंग अदर वुमेन, और उन्होंने अभी अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वुमेन 50 वुमेन थी, लेकिन उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो दैट इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड। और एज अ पॉलिसी मेकर्स या फैसिलिटेटर्स हमें क्या करना चाहिए? जो इनइक्वालिटी इन पेमेंट है, मनरेगा के साथ किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि वुमेन अपने फार्म पे ही वर्क कर रही है एज अ लेबरर, पर उसको उसका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो क्या उस मनरेगा स्कीम से उसको जोड़ा जा सकता है? तो ये हो सकता है। जो डिफरेंस है पेमेंट में लेबर की या हर लेवल पे, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो हमें अपनी बेटियों को भी सशक्त करना है, और वो ग्राउंड लेवल पे ही करना चाहिए। जो एज मोबियस वी आर डूइंग अवर पार्ट, और जैसे उदिता मैम ने कहा कि ये चेन होना चाहिए, हम दोनों को, हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट होके एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। ये एक शब्द ना रह जाए, इसको सच में एम्पावरमेंट पे। थैंक यू। Thank you so much, Dipti Rai, for pointing out the obvious. There is gender equality, inequality in terms of pay. Her work is not, the women's work on the field is not compensated in monetary terms, because she does it as part of her duty or responsibility. Whatever money is, or they receive as part of the schemes or policies, it never reaches her. So some very true pointers that you have showcased. And now I think I'm seeing a farmer who went missing, Gunja Das. She's back. Welcome, Gunja Das. गुंजा अपना माइक ऑन करिए, Unmute. माइक अनम्यूट करिए। जी नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो माफी मांगना चाह रहे हैं, जो हम लोग गांव में हैं, हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क के लिए परेशानी रहती है, तो कैसे कैसे मिला है। और हाइपर इंटरनेशनल ऑफ इंडिया में हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं, जो इनसे हम लोग पहले था हम लोग का कि घर में ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, या फिर हम लोग को घर में जो लोग घर के आदमी से जो मुखिया होते थे उनसे हम लोग का परिचय होता था। लेकिन ये समूह में जुड़ने के बाद, एनजीओ में जुड़ने के बाद हम लोग का एक बैठक के द्वारा हमको पता चला, जैसे इसमें कैब का कोई रोल है, कैब का काम है, तो हमको यहाँ से मदद मिला। हाइपर ने हम लोग को ट्रेनिंग दिलवाई कैब का। मेरा ट्रेनिंग हुआ था लगभग 2021 में मैंने ट्रेनिंग लिया था, पहला ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग को बकरी के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में बताया गया, बकरी के बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में, और दूसरे गांव में दूसरे जगह जाके उनका दीदी लोग को एक्टिव करना है, जो बीमारी के विषय में बताना था। और जैसे कि बहुत सारे बीमारी हो रहे हैं जिसका वैक्सीनेशन ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। डिवॉर्मिंग के बारे में, कृमिकरण के बारे में, बधिया के बारे में, बहुत सारे ऐसे चीज जो हमको भी नहीं पता था इसके पहले ट्रेनिंग में या फिर मीटिंग में जुड़ने के पहले, हमको भी उसके बारे में पता नहीं थी जो ये सब कुछ होता है। लेकिन संस्था में जुड़ने के बाद, धीरे धीरे हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग को खुद जानकारी हुआ। उसके बाद फील्ड में हम लोग को मौका मिला काम करने का, अपना नाम करने का, तो हमने धीरे धीरे फील्ड में जाना शुरू किया, बकरियों का इलाज करना शुरू किया, उनको जागरूक करना शुरू किया, जो आप कैसे बकरी पालन से आगे बढ़ सकते हैं, गांव में रह के, अपने घर पे ही रह के आप लोग कैसे अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मैंने भी खुद बकरी फार्म के लिए मैं छोटा सा 2-3 बकरी मैंने खुद पहले रखना शुरू किया। उसके ऊपर इंजेक्शन देना है, डिवॉर्मिंग करना है, वैक्सीनेशन करना है, सबके बारे में खुद हम अपने बकरी में ही प्रैक्टिस करने के बाद ही दूसरे बकरी को चाहे बाहर में भी करना शुरू किए। करते करते आज हम लोग ट्रेनिंग के बाद मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा, इससे हमको महेश सर से मदद मिला। उन्होंने हमको मौका दिया, जो अगर आप चाहते हैं काम को और आगे बढ़ाना और अच्छी तरह करना, तो आपको हम सहायता की तरफ से गाड़ी की भी मदद कर सकते हैं, स्कूटी की मदद। पहले हम लोग का था जो हम लोग पैदल चलते थे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं चल पाते थे। लेकिन हाइपर से हम लोग को मदद मिला गाड़ी का, स्कूटी की मदद से आज है जो हम, अगर हो सकता है तो एक दिन में हम लगभग 20 किलोमीटर भी रनिंग कर लेते हैं। अगर कोई रात को कोई भी इमरजेंसी केस आता है, सुबह ऐसा कोई भी इमरजेंसी केस आता है, हम लोग उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ता, हम लोग गाड़ी की मदद से ही अपना जहाँ जाना है
और उसके लिए हम मेरे घर से भी हमको हेल्प मिलता है, मेरे घर से भी मेरे सपोर्टिंग रहता है। और महेश सर, हमारे पाराबेट, हमारे पीसी और हाइफर में जितने भी हमारे स्टाफ है ना, सबका मदद हमारे पास रहता है। वो कोई भी हमारे तरफ हम लोग के लिए, कैब के लिए अगर कोई भी नया कुछ भी होता है तो उन लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं। कि दुकान के लिए भी हमको सपोर्ट मिला था, जिसमें मैंने छोटा सा दवा दुकान 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को जो भी मिला, उस पर सर ने हम लोग को कहा जो आप हम लोग सहायता राशि आप लोग को दे सकते हैं, उसमें आप लोग अगर बिजनेस के हिसाब से अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो मैंने छोटा सा एक दुकान किया है, जो मेरा दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। दुकान करने से जो हो गया, जो मेरे घर में दरवाजे पर ही दुकान है, और दुकान करने से जो मेरा जो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का ट्रेनिंग का भी मतलब ऐसा नहीं, जब हम लोग जब ट्रेनिंग लिए थे, मेरा पहला जो ट्रेनिंग था उसके लिए झारखंड से ट्रेनर लोग को बुलाया गया था, जिन्होंने हम लोग को ट्रेन किया। हम लोग का पहला बैच था, लेकिन शायद सर को अच्छा लगा तो सर ने मुझे हमको दोबारा मौका दिया। जो हाँ, अगर आप ट्रेनिंग देना चाहती हैं तो मैंने कहा जी सर, हम दे देंगे। तो दूसरा जो लिस्ट में जितने भी लोग के लिए जो चयनित हुए थे, उन लोग को ट्रेनिंग मैंने दिया। और उसके साथ साथ धीरे धीरे मेरा जानकारी या फिर परिचय बढ़ने लगा। मैंने बाहर भी ट्रेनिंग देना शुरू किया, IM ट्रेनिंग या फिर पशु सखी को तैयार करने के लिए, कैब के लिए, सबके लिए मैंने ट्रेनिंग दिया। और अभी भी दे रहे हैं, अभी भी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं हम अलग अलग पंचायत में, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ सिर्फ पशु सखी तक या कैब तक हम मतलब नहीं रह गए। इससे ट्रेनिंग के अलावा कृषि विभाग से भी हम लोग का बहुत अच्छा लिंक है। कृषि विभाग में भी हम लोग जाना आना करते हैं। जितनी भी समूह की महिला है, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, सब लोग को मुफ्त बीज दिलवाना, प्रशिक्षण करवाना। पशुपालन विभाग में आप पशुपालन करके पशु कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपको दिक्कत हो रही है कृषि कृषि कार्य में, जो भी दिक्कत हो रही है, दवा है, खाद है, बीज है, आपको जो भी दिक्कत है आप KVK में जाके अपना दिक्कत कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवाएगा। इस तरह के हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। साथ में ही हम लोग में सरकारी जो गवर्नमेंट स्कीम जो है वैक्सीनेटर का, मैं वो भी कर रही हूँ, जो हमारे ब्लॉक कुढ़नी ब्लॉक की है। तो कुढ़नी ब्लॉक में हम एक वैक्सीनेटर के रूप में भी है। और जो बड़े जानवर में, गाय भैंस, जो बड़े जानवर में जो वैक्सीनेशन होता है ना, हम वो भी करते हैं। मेरा जो शुरुआती जो बहुत दिक्कत, मैंने बहुत परेशानी वाला समय था मेरे लिए, लेकिन आज के समय में गांव में ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि कोई मेरे नाम को नहीं जान रहा है। मेरे यहाँ पे बहुत बार अमेरिका से भी, नेपाल से, दिल्ली से बहुत सारे सर लोग आए थे, बहुत सारी टीम आई थी हम लोग का इंटरव्यू के लिए, जिसमें अमित सर थे, नेपाल से नीमा मैम थी, उसके बाद रजनी राजपूत मैम थी। बहुत सारे ऐसे मैम थी जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो नहीं, आप इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप लोग में है जो आप लोग कर सकते हैं कुछ आगे बढ़ के। इस जुड़ने से पहले हम लोग का स्थिति बहुत खराब था, हम बहुत ज्यादा ही दयनीय थी स्थिति। लेकिन आज जुड़ने के बाद लग रहा है, जो आज बोल रहा है ना हैप्पी वुमेन्स डे, वो आज सही में लग रहा है। जो हाँ, वुमेन डे है, महिला दिवस जो है, महिला दिवस सही में हम लोग के लिए। और हाइफर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र के महिला को, जिनको घर के अलावा और बाहरी कोई काम नहीं आता था, जो कि हम लोग को सिर्फ खेती बाड़ी और घर, उससे ज्यादा हमको नहीं पता था जो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा मेरा कोई नाम हो सकता था, जिसके लिए आज सर हमको फोन कर रहे हैं। चाहे आज इस मीटिंग में भी हमको जुड़ने का बहुत बड़ा मौका मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हाइपर इंटरनेशनल इंडिया को, जिन्होंने हम लोग जैसे महिला लोग के लिए ये समूह बनाया, SHG ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोग को आगे बढ़ने की क्षमता मिली। और जी सर।
धन्यवाद जी बधाई गुंजा दास धन्यवाद Gunja Das ji. Thank you truly for sharing a story with us. I think that is it basically because just like some other panelists said that we have to give them support, and with support we can see that how she emerged from being a normal homemaker to being a caregiver, and then by giving her vehicular support she could cover large areas, and how she was expanding her territory, and how probably the first time somebody said that truly on a women's day she could really say that it was a happy women's day. She's truly happy with what she has achieved. Thank you, truly inspiring. Next, we can go on to our panelist, Priyanka Malik. She's MD Q and QRI. So, Priyanka, you must have heard how women from different sectors, yes, they are sharing their stories. And it's one thing about this is that people from different segments, they have different perspectives, like what needs to be done, and that gives us a whole picture. And now you're coming from a corporate segment, so the story of women is probably the same, maybe in a different light. There is still that gender gap, may not be in terms of wages or anything, but in terms of several other factors. So you must have seen that, you must have maybe experienced it, I don't know, but you have the numbers with you. So what does those numbers tell us? First of all, thank you so much, Anjana, for inviting me on this platform. And I am so glad to see and hear all the inspiring stories. पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी फूलमणि जी को, नूतन जी को, गुंजा देवी जी को. आपने बहुत प्रेरित किया है आज हम सभी को on this platform. And what I have seen from today rather is the trends that we observe being, we are a market research organization working in the agriculture sector. We are 100% women owned. And today what I see is that there is a very, very different perspective of or the meaning of empowerment in rural India amongst our women farmers versus what I see in corporate India today. Just to state some numbers here, we have probably all heard less than 2% of Fortune 500 companies in India have women CEOs. We see 48% of women who go on maternity leaves in corporate India, they don't resume work back again. And those are startling figures. We are seeing a gradual drop in senior leadership roles in India today. And these are very startling and very worrisome figures. And something that I personally see in my organization also is we do a lot of recruitment of women from agriculture institutes, universities, agribusiness management universities. And while all of these women have studied agriculture, they are very, very keen to have careers in agriculture. They start with a lot of enthusiasm in year 1, year 2. But as it progresses, we do see a dip in that enthusiasm at two particular stages of women's lives. One is when they get married, and the second is when they go into motherhood. And what I have today noticed amongst our women farmers is they are all mothers, wives. They play a very important role in their own family. But look at that zest for business. Look at that zest to lift themselves up, to be strong contributing members in their own families. This is something I think is missing. When I talk to women about, what do you do? How do you invest your money, the money you earn? And a lot of women tell me, oh, that's something my father or my partner or my brother look into. Why not? Why don't you invest your own money? So somewhere I do see that women start to put their career second when they enter more, I would say, typical roles of women. Now, we all know women are nurturers, but unfortunately, they forget to nurture themselves first. And while we all can talk about, of course, empowered women, but I believe the first empowerment comes from within.
And if you see all the initiatives taken today, you know, by Hi for India, we've seen all the initiatives, Drone Didi, everything. The woman has taken the initiative to go and get empowered. The support is there. We have a lot of organization, the government of India. We have very empathetic men around us who support us. But I believe that the first onus is on the woman to empower herself. And when that comes, I think we will see a change. I would say for urban women today, the narrative has to change. And I think that it's too late when you are in your mid-20s or 30s. The narrative has to change from your home when you were born, from your family, that you know that you're not just going to be a housewife or a mother. You are also going to have financial independence. You're also going to take big roles in the corporate sector. And I think after listening to our women farmers, I think what better role models? You know, we see a lot of role models in the urban landscape, but we don't see a lot of these inspiring stories that I've heard today. You know, and I would love Please translate that into Hindi so that they can also hear. मैंने हम इतने सारे you know महिलाएं जो प्रेरणा देती हैं हम अर्बन इंडिया में देखते हैं, चाहे वो एक्ट्रेसेस हो, विमेन इन बिजनेस हो, कोई भी हो, बट जो किसान महिला किसान है आप जैसी, आप लोगों से जो हमें आज प्रेरणा मिली है, ये हमें बहुत कम लोग हम सुनते हैं, हमें पता चलती है. ऑफ कोर्स आई एम सो ग्रेटफुल कि आज ये ऐसी प्लेटफॉर्म पे हमने सबको सुना है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक आई वुड लाइक टू कमिट टू ब्रिंगिंग दी स्टोरीज फॉरवर्ड, because we travel across India. We meet over 50,000 farmers a year. We meet women farmers while we travel for various projects that we do in agriculture. And I would like to commit कि इनकी कहानियां हम लाएंगे सामने, because they are role models not just in the farming community, in rural communities, but also to urban women in India today. And we need these role models. So धन्यवाद आप सभी का. And thank you so much for this platform. I completely second Dr. Udita. It is not Happy International just Women's Day. It's Happy International Women's to everybody, every member of the community. So thank you so much. Thank you, Priyanka. That was really true. I mean, I have also noticed that change. I mean, with women farmers, for them it's do or die. I mean, they have to do it. They have to. For us, coming from a privileged place, entitled place, we are okay to let go in between. So thank you again, the women farmers, to have inspired us to have awakened something inside us too. Yes. And as you said, Happy Women's Day, like Dr. Udita said, Happy Women's Day, it's just not for us, for women, for men also. So we have a man speaker to share his perspective with us, who has opinions about, I think, all the topics, and I'm really looking forward to hearing from him. So let us welcome Mr. Deepak Parekh. I think he has joined us. Yeah. Welcome, Mr. Deepak. Yeah, thanks a lot. It was really very insightful. So all सारी जो महिला किसान हैं उनको सुन के बहुत अच्छा लगा. I have been lucky. मुझे थोड़ा सा having worked with women farmers, so बहुत सारे महिला किसानों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो इंडोनेशिया रहा हो, चाहे वो घाना रहा हो, हिंदुस्तान में डेफिनेटली बहुत जगह काम किया है. और एट द सेम टाइम काफी एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स उनके साथ भी काम किया है. सो ये सब जब मैं सुन रहा था तो मैं कुछ डॉट को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा था कि जब खेती किसानी या एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, सो वुमेन इन एग्रीकल्चर, चाहे वो बोर्ड रूम में बैठ रही हो या वो खेत में हो, क्या डिफरेंस है उनमें और एक मेल और मैन और मेल फार्मर, सोच में फर्क क्या है? सो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. सो अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सिपियांग करके एक बड़ी इन्फ्लुएंसर फार्मर है इंडोनेशिया के अंदर, जो देली सरदांग एक सुमात्रा जो वहां का प्रोविंस है, वहां पे काम के साथ किया हमने ऑन राइस. एंड 2 साल के अंदर हमने देखा उसने करीब 100 और महिला किसानों को सशक्त किया. सो उनका खुद का यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ा और उन्होंने सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेके बायोटेक्नोलॉजी से लेके काफी चीजें हमारे साथ जो की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि मैं समझी हूँ
तो मैं चाहती हूँ कि इसको और भी हम इसको आगे लेके जाएं और भी महिला किसानों के साथ काम करें। सिमिलरली सीता देवी जिनसे हमने डिजिटल पोटैटो प्रोजेक्ट किया था साबरकांठा में, सो उनका जब पहले साल के अंदर ईल्ड 18-19 टन से 40 टन तक पहुंच गया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब इसको यहाँ पे नहीं रोकना है। इस साल मैं चाहूंगी कि मैं और महिला किसानों के साथ काम करूं, एंड सडनली दैट लाइक एक किसान के साथ जो हम काम कर रहे थे, वो ट्राइब बढ़ के सिर्फ महिला किसान नहीं, उन्होंने जो पुरुष किसान थे उनको भी इसमें जोड़ा और वो 280 किसानों का प्रोजेक्ट बन गया। नाउ कमिंग ऑन द बोर्ड साइड, राइट, बोर्ड रूम साइड, आई गिव एग्जांपल। एक हेदी कुन करके, शी रन्स रूट फॉर पीस प्रोग्राम। उनका काम ये है कि जहां पे भी वॉर के बाद माइंस बिछी होती है, वहां पे माइंस हटा के वहां पे वो खेत बनाते हैं। सो उन्होंने अफगानिस्तान में काम किया, बोस्निया में काम किया, एंड वहां पे उन्होंने, जो उनसे जब मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उनका कहना ये था कि मैं कम्युनिटी के अंदर एक एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ। तो जब उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला अफगानिस्तान में, उन्होंने बोला अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ यूएस के सपोर्ट में हम ये कर सकते हैं, तो क्या हम और जो ऐसी महिलाएं हैं दुनिया भर में जो कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, तो क्या उनके एक ट्राइब बना सकते हैं। तो उन्होंने ये रूट ऑफ फॉर पीस करके एक इनिशिएटिव चालू किया, और आज आई थिंक वो करीब करीब 100 देशों में काम कर रहे हैं। सिमिलरली एक पॉन्सई करके एक मेरी मित्र है, वो सीईओ है, कंपनी का नाम है इनारा। सो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च करके काफी कुछ, शी वाज लाइक सिजिटा की, शी वाज हेडिंग नॉर्थ अमेरिका, सो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब करी थी। उनको एक स्पार्क हुआ कि हम पानी का कम उपयोग करके हम क्या ऐसे सीड बना सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड उनका भी जो फोकस था कम्युनिटी। सो जो कम्युनिटी वर्ड है, और आज भी मैं सुबह से सुन रहा हूँ, जितनी भी महिला किसान आई है या कॉर्पोरेट जगत के जो भी महिला है वो आई है, वो कहीं ना कहीं बात घुमा के कम्युनिटी पे ले आती है। सो मुझे लगता है कि एक ये जो माइंडसेट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के अंदर, या पुरुष और महिलाओं में, कि जब पुरुष सोचता है वो अपने बारे में सोचता है, मी, माय कंपनी, माय फैमिली, लेकिन जब महिलाएं सोचती है वो कम्युनिटी के बारे में सोचती है कि मैं कैसे मेरी कम्युनिटी को आगे लेकर जा सकूं। सो आई बिलीव दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर। सो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एग्रीकल्चर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आनी चाहिए, सीईओज बननी चाहिए, सीएक्सओज बननी चाहिए। और एट द सेम टाइम हम जानते ही हैं कि करीब करीब 60 to 70% जो फार्म लेबर हिंदुस्तान में जो होता है, खासकर जो हम हिंदी पट्टी बोलते हैं नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, वो सारा डिफिकल्ट काम काफी महिलाएं करती हैं, लेकिन उनके पास एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि जमीन उनके नाम पे नहीं होती, पैसा उनके हाथ में नहीं होती। So I believe, as from the male community, though I believe, like I don't differentiate between genders, but at the same time मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को ज्यादा सशक्तिकरण करें, सो इनफैक्ट काफी स्टडीज भी हैं कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ पैसा किसी पुरुष किसान के हाथ में देते हैं और उतना ही पैसा या रिसोर्स आप महिला किसान के हाथ में देते हैं, तो पुरुष की प्रोडक्टिविटी 8 से 10% बढ़ती है और महिला के 20 to 30% बढ़ती है। सो आई थिंक दे आर एफिशिएंट समवेयर फॉर श्योर। Definitely, like I don't have that level of research capability to understand कि महिलाओं में ऐसा हमसे क्या बेहतर होता है कि वो बड़े लेवल पे कम्युनिटी के बारे में सोच पाती हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाती हैं, रिसोर्स को हमसे ज्यादा यूज कर पाती हैं, और खुद की फैमिली और खुद के गांव और खुद के देश के लिए हमसे ज्यादा डिलीवर कर पाती हैं। So I believe, like that is what we male have to think about, right? What we are doing wrong so that we are not as efficient as women. So I congratulate all the women and all the male who support women on this Women's Day, and thanks a lot, Anjana ji, for inviting me to like share my views. Thank you. Thank you, Mr. Parekh. It was good to know your opinion, your perspective about what is different between men and women, and women think more about the community, or maybe it is kind of the upbringing or whatever, I don't know, but there is a general consensus that women are more community oriented and than men, but we are not sure about it. It's so thank you all. I think we have covered everyone in this webinar, and if anybody wants to say anything, because it's towards the end, so if anybody want to speak anything, maybe we have 5 minutes more. We can have 5 minutes more. If those who have not spoken or any points to add. Otherwise, I'll give this one to Miss Vinita. She will be giving the vote of address. But before that, thank you all for coming. And I think we had this vibe, we have this connection during this webinar, and maybe it was the topic or what, I don't know, but it felt really, really from the heart. And thank you so much. And over to you, Vinita.
Thank you all for joining us today and making this International Women's Day more special. एंड मैं एग्रीकल्चर टुडे और हेफर की तरफ से महिला किसानों को खास धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से आज इस वेबिनार का जो रियल मीनिंगफुल डिलीवरी थी वो पॉसिबल हो पाई है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप पैसों से उनको एम्पावर कर सकते हैं, शायद वो ना भी हो, क्योंकि जैसा कि अभी बताया मुक्ता ने कि प्रियंका ने कि वो अभी भी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं मेल मेंबर पे डिपेंडेंट है। तो अगर सही में हमें सशक्तिकरण करना है तो उनमें कॉन्फिडेंस जो है उसकी बहुत जरूरत है। हमें उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना ही केवल खेतों में बल्कि स्कूल लेवल से ही जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, बट मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस अमंग विमेन सो दैट दे कैन बी रियली एम्पावर्ड एंड वो अपनी सोच और अपनी थॉट्स आगे रखने से घबराए ना। एंड दीपक जी, मैं आपने जैसा कहा कि वुमेन की मोर प्रोडक्टिविटी होती है, ऐसा स्टडी ने बताया है। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट वन थिंग अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन। वाइल हायरिंग डॉक्टर खान ऑलवेज सेज कि मैं हमेशा वुमेन को प्रेफरेंस देता हूँ जब भी मेरे पास रिज्यूमे आते, बिकॉज आई एम श्योर दैट शी इज गोइंग टू बी मोर सिंसियर एज वेल एज मोर प्रोडक्टिव। So this is the kind of culture which we have in our organization towards women, and happy International Day to all.